हेलो एवरीवन, इट्स मी आकृति पांडे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं आपको जो है हिस्ट्री के चैप्टर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म का क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवा रही हूँ आज मैं। तो चलिए करते हैं। ये हिस्ट्री का चैप्टर 4 है और देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले क्वेश्चन दिए गए हैं। डिस्कस हाउ द चेंज इन द फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन द कॉलोनियल पीरियड अफेक्टेड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पीपल। जो कॉलोनियल पीरियड के टाइम में फॉरेस्ट में चेंज हुआ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, वो इन चीज़ों को कैसे, इन जो ये लोग हैं इन ग्रुप्स को कैसे अफेक्ट करता है। कॉलोनियल पीरियड यानी कि जिस पीरियड में अंग्रेज जो है कंट्रोल करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कैसे करता है, नोमैडिक एंड पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी को, फॉर्म्स एंड ट्रेडिंग इन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, प्लांटेशन ओनर को, किंग ब्रिटिश ऑफिशियल इंगेज्ड इन हंटिंग। सो आइए देखते हैं हम। आज फ्रेंड्स मेरा थोड़ा गला खराब है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करवाती हूँ। Shifting cultivation practices slash and burn agriculture in the practices part of the forest are cut and burn in a rotation। मतलब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थे वो जब उसमें रोटेशन करते थे, यानी कि अब की फसल बो के फिर दूसरे साइड चले जाएंगे, नहीं तो उस जो ज़मीन की फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है बार बार उसी पे एग्रीकल्चर करने से, तो वहाँ पे फिर बर्न करके चले जाते थे। European foresters regarded practice and harmful forests they felt in as such could be used to growing trees and railway timbers। What is timbers? ऐसे गोल गोल होते थे guys timbers, और जो रेल के पटरी पे लगता था वो स्लीपर्स होते थे। Could not use to going a railway timber and use a dangerous while a burned as could start a forest fire। This type of cultivation are made it difficult for government to calculate the taxes। This colonial government banned the shifting cultivation। As a result, many communities were forcibly displaced by their homes in the forest। Some had to change the occupation, some has to resist through the large rebellions। मतलब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन में बर्न करके चले जाते थे, इससे अंग्रेज को टैक्स कलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती थी और इसी वजह से कुछ लोगों ने अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर दिया और कुछ लोग रिवोल्यूशन पे उतर आए। सेकेंड हमारा हो जाएगा द रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो सील्ड द फ्लैट ऑफ मैनी नोमैडिक एंड पेस्टोरल कम्युनिटीज लाइक द कोरवा एंड कराचा एंड याकुरा एंड मद्रास प्रेसिडेंसी लॉस्ट देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। Earlier, the people of their cattle depended on totally the forest which they are derived because of the new forest management. Some of the communities began to be called criminal tribes and were forced to work factories, mines and the plantation under government supervision. Thus, the forests were forced that operate within a new system and recognize their lives। तीसरा हम देखते हैं farm trading are timber produce given by the sole trading right to made in a forest produce in particular area। They made the huge profit, became richer, the entire timber and the forest trade past them। They became powerful, began to cut down trees indiscriminately। So next question देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Plantation owners are found that more forest that land could be cleared for plantation। The British had made it very clear that their system of forestry would be scientific forestry। What is scientific forestry? Scientific forestry होता है कि पेड़ों को कट करके लाइन वाइज एक ही पेड़ को ग्रो करना, वही साइंटिफिक फॉरेस्ट्री होता है। प्लांटेशन ओनर बीइंग अ रीप प्रॉफिट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू यूरोप प्लांटर्स। While the forest dwellers were derived the right to hunt deer, partridges and the variety of small animals in Indian kingdoms, and the British officers were allowed to hunt freely and reserved forest। Under the colonial rule, the hunting increased such extent that various species became extinct। A large number of tiger, leopards, wolves and killed the sporting tropo hunting the shikars became a sports। Later environmentalists and conservators realized many species of animals needed to be protected and not killed।
क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन कॉलोनियल मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट इन अ बस्तर इन जावा। आंसर हो जाएगा द सिमिलरिटीज बिटवीन द कॉलोनियल मैनेजमेंट एंड द फॉरेस्ट इन बस्तर एंड द वर जावा वर फॉरेस्ट लॉ वर इनेक्टेड जावा एंड बस्तर। फॉरेस्ट लॉ इनेक्टेड किए गए थे जावा और बस्तर में। दीज लॉ रिस्ट्रिक्टेड विलेजर्स एक्सेस टू फॉरेस्ट और टिम्बर कुड नॉट बी कट फ्रॉम ओनली स्पेसिफाइड फॉरेस्ट अंडर द क्लोज सुपरविजन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विलेजर्स वर पनिश्ड फॉर एंटरिंग द फॉरेस्ट एंड कलेक्टिंग द फॉरेस्ट प्रोडक्ट विदाउट परमिट। यहाँ पे फॉरेस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था जो है, और गांव वालों को केवल विलेज फॉरेस्ट में जाना अलाउड था और उसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। परमिट वेर इशूड द विलेजर्स एंट्री टू द फॉरेस्ट एंड कॉलोनियल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। बोथ हैड अ फॉरेस्ट सर्विस, बोथ followed by the system of forestry which was not a scientific forestry. नेक्स्ट हमारा देखते हैं, in both places forest and meant and serve hardship for villagers. There are everyday practices, cutting wood for their house, grazing their cattle, collecting fruits and roots, hunting the fisheries became illegal. Constable and forest guard began to harass people. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिटवीन 1880 and 1920 forest cover the Indian subcontinent declined by 9.7 million hectares from 108.6 million hectares to 98.9 million hectares. Discuss the role of the following factors in decline. तो पहला हमारा फैक्टर रेलवे, शिप बिल्डिंग, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन एंड कॉमर्शियल फार्मिंग, टी कॉफी प्लांटेशन, एडवाइजेज ऑफ अदर peasants users. So पहला हमारा हो जाएगा, रेलवे played a vital role in decline the forest cover in the Indian for laying a railway tracks for forest land had we cleared. Apart from a clearing area tracks, railway locomotions required a timber for a fuel sleepers. For all these needed a forest and cut down. Needed for cut down the British government. Java controlled the individual supply to require the quality of timber. These individuals cut down the trees and indiscriminately. Second point, by the end of the 19th century oak forest in England. आप हमें comment section में बताएंगे what is oak forest, और next वीडियो में मैं बता दूंगी अगर dispersed. This create the shortage of the timber and Royal Navy, if the imperial power was be protected and maintained the building ships and first priority to search the parties were sent to the explore the forest resources of India. A large number of sleepers being to be exported from England annually. This future led to be a indiscriminate cutting the trees after the year, which accused the distortions on the massive scale on mean large scale. The next हमारा थर्ड पॉइंट है, population was on the rise and demand on the food increased present extent the boundaries of the cultivation. By clearing the forest this Java them more land available for cultivation. In addition, there was a great demand for the grass crops such as the tea, cotton, jute and demand of grass crops, tea, cotton, jute, sugar, etc., which are needed to feed the industrial and England. And next point है हमारा, the British directly encouraged the production of the commercial crops like jute, sugar, wheat and cotton. Our demand for these crops increased in 19th century Europe for their food grains were the needed for the fed, and the urban population was material where the required the industrial production. Hence the large tracts of the forest land were cleared to make a land available for commercial farming. And fifth हमारा है, the colonial state through the forest were unproductive as the did not yield agriculture produce and revenue. Large areas of natural hence cleared to make a tea, coffee and rubber plantation moved to Europe growing these commodities. The colonial government took the forest and great vast area to European planters and cheap rates. This area enclosed the cleared to forest planted with the tea and coffee. Next point is the advice of the other peasant user gathered for forest product and the graze their cattle. Their livelihood mainly come to forest produce. This does not destroy the forest except sometimes the
shifting agriculture facts in now new trends and promote forest. Conservation tends to involve local villagers and conserve and preservation the advice of the other peasant communities and regard the question forest as their own, even engage and watchmen to keep their vigil over their forest. Why are forests affected by war? Answer. Answer. Forests were affected by the wars and this often led to deforestation. Forests during war freely cut down the meat near wars. Forests are the important resource and hence during the wars all destroyed by the own country. Under the scored earth policy, this prevent the enemy from using the resource. Many villagers use this opportunity to expand cultivation in the forest. सो गाइज इतने कुछ क्वेश्चन थे, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन करके। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, सो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर